Hello guys, my name is Ashish and welcome to YouTube channel. So guys, आज की वीडियो में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी जो मैंने दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई आप लोगों के लिए. एंड सेकंड थिंग, आज मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ ब्रिटिश मोटर म्यूज़ियम, जो कि कार लवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है. एंड फ्रॉम जैगवार हेरिटेज एज वेल. तो ज़्यादातर जो भी गाड़ियाँ होने वाली है वो जैगवार की थ्रू होने वाली है. बट इट विल बी फन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट वीडियो को एक्साइटिंग बनाने के लिए. तो बने रहिए वीडियो के एंड तक. एंड सॉरी अगेन मैंने इतने दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई. होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो. सी यू. Guys, so I'm here with my friends and हम लोग वेट कर रहे हैं सिर्फ अपनी Uber का. So like it's going to come in like 4 minutes and these are all my friends. इनको कोई भी मेरी वजह से समझ नहीं आता. He doesn't have any more friends, by the way. So I will tell them that कि YouTube पे आने वाला है, but they will watch it anyhow. Yeah, but I'm seeing. Oh, you driving? Yeah. Don't do it, mate. Yeah, I hear that many people going there. Many people they going there. And no terrorism attacks, a lot of beaches, Safe, good yeah? girls. Safe, yeah? Well, for Yeah. the company. Yeah. But it's compulsory or it was your option? No, it's my option. Okay, okay. My option. No, here in UK, it's all like Europe, yeah. If they hit you, and you don't have record, they can't do anything. Off witness, off recording. Really? Yeah. So low. It's a grandpa. Nice grandpa. So we are out and yeah, those guys are just having fun there. And let me show you something really cool. You don't like You have no taste. Well, there's not really nothing happening on the side. Just one surface going inside of another surface. And Okay. it's done. You get what you get. A few inches later. something interesting. This is the new Z4, the BMW M, and just look at the looks of the car. Just देखो इसको एक बार. See these shapes. It is nice. You haven't seen this before? Man, I was project manager of this car. Oh, you are the project manager of this car. So here is the project manager of this car. Where was it? J29. When you were in That's Portugal? production name. G29 and J29. Toyota Supra and BMW. They have like 70% of their spare parts. They are all the same. Only the body side is different. You open the hood, everything is all the same. But this is damn beautiful. Yeah, this is sexy, man. Yeah. This is the TVR Chimera, and this car is actually for sale, guys. Look at the car. It's 1993 4.3 liter V8 engine. ये छोटी सी कार में एक V8 इंजन है जो कि लगा हुआ आगे, एंड ये फाड़ के निकलेगी अगर ये दौड़ने लगी तो. दिस इज TVR, एक ब्रिटिश कंपनी है, अगर आप लोगों को पता हो गाड़ी के बारे में थोड़ा सा. इट्स टोटली ब्रिटिश. एंड लुक एट द कार. वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें. ऐसा ही कूल स्टफ अंदर जाने के बाद आएगा, जो कि वो है म्यूज़ियम. एंड अभी तो हम पार्किंग लॉट में ही हैं और हमें 3-4 कूल लुकिंग कार्स देखने को मिल गई हैं. सो एंजॉय द फुल वीडियो.
Yeah, that's the same one. It's a TVS Nara. And that car, the yellow वाली जो आ रही है, वो the same car है, वो जो sale पे थी, red one. And V8 की आवाज़ आप यहीं से सुन सकते हैं. Like, this is my new car, yeah. This is my baby car. This is Jaguar E-Type 1963 and see how long is it. Holy shit. This is really nice, guys. And here comes the Rolls-Royce Phantom. This is 2002, not so old, but see how good looking and long is it. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and a half steps long. Rolls-Royce Phantom 2002. Let me show you the interiors. ये V12 इंजन है गाइस इसमें. See the bonnet यहाँ से लेके वहाँ तक. So it's a V12 engine and 453 bhp power, and like how much was the top speed is somewhere around 250 kilometers per hour. And इसका न्यू का प्राइस है मे बी 2.5 करोड़ के आसपास का. 2002 में इसका प्राइस है 2.5 करोड़ के आसपास का. बट I think Rolls-Royce has done a really good job for 2.5 करोड़ के हिसाब से. So it's really nice. So ये है MG 2004 with power 320 bhp. Super sexy man. MG X Power. ये 2004 में guys. This is really nice. 320 bhp power, top speed maybe 250 से 300 के बीच में. Let me confirm. I'm not sure about the power. Sorry, speed, top speed. टॉप स्पीड जो है इसकी 264 किलोमीटर, 320 bhp. आई वाज राइट. एंड V8 इंजन है इसमें. 2004 MG X Power SV. And that is 2001 Aston Martin. .460 bhp V12. This is a V12 460 bhp 280-300 km per hour top speed. And this is Aston Martin 2001. Still looks awesome. Comes the McLaren, guys. McLaren 620 bhp power and V12 with, this is a prototype vehicle, and see, it's a PP7 prototype vehicle, and this comes in I think 2011. Yeah, 2011 McLaren MP4. And मैंने इंस्टाग्राम पे अभी थोड़े दिन पहले पिक्चर डाली है
McLaren की ही, वो एक हमारा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था डिफरेंट McLaren के साथ। एंड मैं एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जैगुआर के साथ अभी, सो दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट टू। इसके बारे में भी अगर आपको स्टोरीज देखनी है तो यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। ये कुछ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है। What the hell? ऐसा आपने पिक्चर्स में देखा होगा, नॉट रियल लाइफ में। सो दिस इज लैंड रोवर एक्चुअली, ओल्ड स्टफ। एंड आपको कभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं। एक लीगो कार जो कि बनी हुई है, नॉट रियल कार, स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं, उसको इकट्ठा करके बनाया इन्होंने 2017 में इन्हीं के ऊपर लीगो स्टाइल। एंड ये भी वही TVR ब्रांड की स्पोर्ट्स कार है पुरानी, जो हमने बाहर देखी थी। एंड इट्स ऑल ब्रिटिश नाउ। एंड दीज आर सम रिकॉर्ड ब्रेकर MGs जो कि टॉप स्पीड के लिए बनाई गई है बेसिकली, ओनली एंड ओनली फॉर टॉप स्पीड। It's 1998 MG and the top speed was 410 kilometers per hour of this one. And this is another 1954 MG Codebreaker and its top speed was 241 kilometers per hour. So in 1941 they tried to achieve 214. See, there is nothing in there, just few surfaces, so the aerodynamics can work and they can get the as much speed as they can. So here in this section all the cars are from movies. This Land Rover Defender is from Tomb Raider. These are all the original cars जो कि हमने वहाँ पे यूज़ की थी पिक्चर्स में. So basically that one. And ये वाली भी. इसका नाम क्या था? इसका नाम था Future Part 2, Back to the Future Part 2, 1981 DMC. And here comes this. Ford की है ये, कौन सी पिक्चर में यूज़ हुई है? I don't know. Let me see it.
2004 Thunderbirds, Fab Thunderbirds. Limousine movie car, and it is used in Lady Pineapple's latest adventure, the Ford Thunderbird. New Fab. Because of this, everyone likes Rolls-Royce. Small things makes perfection, but perfection is not a small thing. So guys, yes, in the second building now. अभी पहली एक बिल्डिंग जो थी वो वाली पीछे वाली वो ख़त्म की है, and now this is the second building, most related to Jaguar, and जिसके लिए हमारे some cool stuff is in there. Let me show you and enjoy the clips. See you. These are actually 1990s, all of these. These ones starts with 2000, after 2000, 2001 Jag, 2004, 2004 XKR, and this is 2005 Jag, this is 2010, no, 2006, and this one is 2014. So, all the variations one place. (2000) Jaguar F-Type concept. See the rear view mirrors on the glass front. A bit odd, but looks nice. Show you one car. ये है Jag 1961 Jag E-Type, जो कि थी फर्स्ट प्रोडक्शन 4.2 सीटर. See this. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड आने वाली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड see you in the next video guys. Hopefully you have enjoyed, and thank you so much, and don't forget to like and share.